respected Pramod Jha sir, respected Firoz sir, respected Rajesh sir, and Mr. Ramchandra Ojha ji sir, and all the intelligent people assembled over here for the great dissection of the novels that we have been just witnessing over here. दोनों जो उपन्यास हैं, एक हिंदी की कृति है और फिर उसका ट्रांसलेशन है जो प्रोफेसर राजेश कुमार सर ने किया है। ये सभी दोनों ही काफी उम्दा क्वालिटी के हैं और सारी चीज बता दी जाएगी तो पढ़ने के लिए आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं, इसलिए मैं ऑलरेडी हम लोगों ने जो विवेचना की है तो उसके हिसाब से है कि आपको कुछ तो पता चल ही गया है नॉवल के बारे में, और मैं जो कहूंगी उसमें भी रेपिटेशन लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी विषहरिया आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। स्वतंत्र भारत के एक पुलिस अधिकारी की दृष्टि से वर्णित है। आमतौर पर भारतीय पुलिस को नष्ट, भ्रष्ट और अनैतिकता से लिप्त दिखाया जाता है, पर ऐसा विषहरिया में नहीं। उपन्यासकार श्री रामचंद्र ओझा जी द्वारा विषहरिया का पुलिस अधिकारी देव अपने चयन, प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण के दौरान गुजरे हुए अनुभवों को व्यक्त करता है। उसके वर्णन में एक अद्भुत महसूस करने की क्षमता ज्ञात होती है और छोटी छोटी सूक्ष्म बातों के वर्णन पुलिस के जीवन की असुरक्षा और कठिनाई को दर्शाते हुए एक अनोखी गंभीरता भी सामने लाते हैं। इसमें श्री ओझा जी के हिम्मत की दाद देनी होगी जो एक तटस्थ दृष्टा के रूप में सारे घटनाक्रम और दृश्यों को एक बेबाकी से सबके सामने रखते हैं। भारत में अनेकों प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लेखक हुए हैं, पर आंतरिक व्यवस्था पर इतनी साफ गोई से शायद ही किसी ने लिखा है। आपको पढ़ने पर आश्चर्य होगा कि कहीं भी इस उपन्यास में पुलिस की नाकामियों को ढकने का प्रयास नहीं किया गया है, न ही पुलिस की ज्यादतियों को सही ठहराने का प्रयास किया गया है और तथाकथित व्यभिचारी पुलिस व्यवस्था को भी जरा भी ईमानदार दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। उपन्यासकार ओझा जी एक पुलिस अधिकारी खुद थे और बेतिया में कार्यरत थे, फिर भी शायद ही कहीं उन्होंने खुलकर पुलिस का पक्ष लिया हो। 27 अलग अलग खंडों में वर्णित इस उपन्यास में सभी दृष्टिकोण को, संपूर्ण परिवेश को दिखाने का एक अदम्य प्रयास किया गया है। विषय और परिवेश की विशालता देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि यह और रोचक हो सकता था। सच्चाई से रूबरू करवाती मनमोहक लेखन शैली अंत तक रोचकता बनाए रखती है और भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण है। यह उपन्यास एक कालखंड यानी ब्लैक पैंथर ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, जो कि एक प्रधान दृष्टा होने का अभ्यास कराता है सारी स्थिति का। अभी प्रमोद सर ने ही जो पंक्तियों का उद्धरण किया, मैं भी करूंगी। पर ये सांप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? सब जगह सांप ही सांप, लगता है पूर्व जन्म का सपेरा होगा। जगह जगह इन सांपों से बचना होता है। जमीन वाले सांप को मात दे दी तो कुर्सी पर बैठा मिलेगा, कुर्सी वाले से बचे तो वह मंदिर में देवता के रूप में मिलेगा, और न जाने कहां कहां। इसमें पूरा अंतर्द्वंद जो उपन्यास का है वो व्यक्त कर दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट्री है हमारे समाज पर, जिसको आप जितना विश्लेषण करिएगा आप पाइएगा उतना ही आप गंभीरता से उसके अंदर जा रहे हैं। इन सब से विषहरिया मानवीय संवेदना का एक अनछुआ इतिहास बन जाता है। बकौल डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी, विषहरिया यहाँ एक रूपक है, जहर सरीखी सामाजिक विसंगतियों की पहचान और उसे उतारने का आह्वान भी। मैना नामक
थारू युक्ति भी एक करुण मार्मिकता है और बेतिया के जंगली पहाड़ी बीहड़ में उसकी गुजरती जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। तो प्रेम को भी, जैसा उर्वशी ने भी कहा, यहाँ पर पूर्ण फोकस मिला है। सभ्यता, समाज और मनुष्य की कड़ी समीक्षा तो इस उपन्यास से हुई ही है, कला के मानदंड को कहीं शिथिल नहीं होने दिया गया है। अब आते हैं इस उपन्यास के ट्रांसलेशन पर, जो कि प्रोफेसर राजेश कुमार द्वारा किया। The novel is that despite historical reality, it does not give the feeling of reading history. Instead, the art and craft of the style of the translator takes you to a world of imagination where both imagination and reality merge with each other to transmute into a situation otherwise quite banal. On one hand, we find violence, kidnapping, encounter, but reading closely gives us the feeling of love and warmth in relationships, a human sensitivity par excellence, signifying a totally different piece of reality. In the preface of his novel, Mr. Ojha says, "The purpose of this work of mine is not to give any information or reality, nor do I wish to change the world through it. If facts and logic are found in the novel, then they are only for the sensitivity and emotion of the listener, that is the reader himself. In spite of this claim, we find that the background of the novel represents the erstwhile Black Panther operation run in Betia at one time for the elimination of bandits. The writer starts the story in a way as to throw the reader into the middle of the river from where he will have to travel the entire novel to get out. The geographical location of Betia, the district headquarters of West Champaran, is located in the Tarai region of Nepal, embodying a rich history as Mahatma Gandhi had started his movement against the British for Champaran itself way back in 1917. However, when kidnapping became an industry over here, everything changed. The protagonist of the novel, Dev, is the head of the operation. Through Dev's childhood, his education, his police training, and his leadership of the operation, one end of the novel takes us to the Naxalbari movement and the other end extends to the latter half of the 80s. When winds of change were blowing in the political and social fabric of Bihar. Thus, Green Over Red becomes a thought-provoking exploration of society's contradictions, examining the complex relationship between the good and the evil, reform and destruction, idealism and disillusionment. The novel follows the lives of two childhood friends, Dev and Abhigyan, whose ideological differences make them treat different paths, yet ultimately revealing the same underlying flaws in society. Dev is a police officer, whereas Abhigyan is a Marxist social activist. Dev becomes part of the corrupt police system, struggling with the brutality of his work, while Abhigyan, after an accident that leaves him maimed, tries to channel his revolutionary ideals into social activism. However, towards the end, we find that both the men are undone by the very systems they sought to reform, their noble intentions crushed under the very weight of reality. The entire narrative is layered with social and political critiques, exploring how efforts to eradicate evil, whether through government intervention or social revolution, often fail and even backfire, leading to great suffering and despair. Ojhaji does not offer every easy ready-made answers. Instead, he shows how both institutional and grassroots solutions can be riddled with contradictions that undermine the success. At the core, Green Over Red is about the human condition, the inner struggles that define each individual's moral compass. Dev and Abhigyan are at polarities, one rooted in state power and authority,
the other in radical transformative ideals. But finally, both fall a victim to their own choices and systems. There is an uncanny tension in the novel between life and destruction, renewal and decay, and how in the end the good often succumbs to the bad, even as we continue to seek change. Ojaji's writing is sharp yet poignant, weaving together philosophical reflections with the raw realities of social conflict. The dialogues are striking and the conclusion melancholic as well as insightful. Abhigyan, after a lifetime of struggle, opens a school, a beacon of hope in an otherwise bleak world, while Dev, broken by the violence of his work, remains mentally ill, symbolizing the psychological toll that a lifetime of moral compromise can bring. Green Over Red is a powerful critique of social reform movements and the personal cost of ideological commitments. Professor Rajesh delves deep into the failure of political movements or societal changes, and the translation brings out these effects as he delves into the psyche of individuals who, despite their best efforts, find themselves consumed by the very forces they sought to control. The translation brings this out powerfully and becomes a piece of sobering meditation on how ideals can be corrupted and how the battle between good and evil plays out the part in unseen, painful ways. Green Over Red becomes a rich intellectual experience that lingers on much after you have read the novel, sharpening the change and the inherent flaws in any system, be they political, social, or personal. Thank you.